औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन कराची की तरफ से आज स्पेसिफिक डेडिकेटेड टू डेंटल एक स्पेशलिटी आप इस CME में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स की एक नुमाइंदा बॉडी है जो मेडिकल एंड डेंटल दोनों में मुल्की सतह पर काम करती है। इसका तारुफ और आगे चीज़ मैं रखने के लिए डॉक्टर अहमद से कहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा CME के बैकग्राउंड और इसके स्पीकर को फॉर्मली वेलकम कर दूँ। हमारा जो CME का जो शोबा है उसकी ये आज इस सेशन में, हमारा सेशन शुरू होता है हर तकरीबन मार्च अप्रैल में, तो इस सेशन की ये तीसरी CME है और डेंटल की एक लिहाज से इस सेशन की पहली CME है। तो मैं अपने स्पीकर्स का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, जिसमें डॉक्टर साकिब हमीद हैं जो JSMU में एज ए अल्तमश में होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जमशेद अहमद वो JSMU में होते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर आरिफ ताहिर वो लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री में होती हैं। तो मैं इन तमाम स्पीकर्स को इस CME में खुशामदीद कहता हूँ। चूँकि इसको आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई चीज़ होती है, तो उसमें ख़ासी लोगों की मेहनत होती है। तो मैं इसमें जो हमारे डेंटल के एक तरह से सेक्शन को जो देख रहे हैं, डॉक्टर सफ़ान, उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ख़ासी मेहनत से और ख़ासी इन्वॉल्वमेंट से ये काम किया, और इनके साथ एक तरह से रहनुमाई के तौर पर डॉक्टर तौसीफ़, उन्होंने भी ख़ासा उसमें हेल्प आउट किया। तो मैं इन लोगों का बिलखुसूस बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो पीमा का तारुफ और इन चीज़ों को पेश करने के लिए मैं डॉक्टर सैयद अहमद हामिद जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पीमा कराची के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और पीमा की सेंट्रल जो काउंसिल है उसके मेंबर भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी गुफ्तगू रखें। डॉक्टर सैयद अहमद हामिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक भाई ने तारुफ तो करा दिया। मैं इंडस हॉस्पिटल में बेसिक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। और जब भी हम CME की बात करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि डेंटिस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मेजर कंपोनेंट है तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का। आप में से अक्सर तो मेरा ख्याल है मेडिकल स्टूडेंट्स भी होंगे। मेरा ख्याल है कितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं? हाथ खड़ा करें। 1 2 3, अच्छा कम है इसका। और ऑनलाइन भी सिग्निफिकेंट नंबर्स मौजूद हैं इस वक्त। कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त ऑनलाइन ब्रदर? अच्छा, जैसा कि मालिक भाई ने शुरू में बताया कि पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन क्या है, तो बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने अगर मैं पीमा का नज़्बुलैन सामने रखूं, जैसे पीमा का जो मिशन स्टेटमेंट है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर और ख़िदमत इलाही के ज़रिए रज़ाए इलाही का उसूल। बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम, अल्लाह ताला ने हमें जिस मकाम पे और जिस पोजीशन पे रखा हुआ था, लोग हमारे पास तकलीफ़ में आते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल लेके आते हैं, और एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो किसी भी, इवन वो नर्स हो, कोई हाउस कीपिंग का स्टाफ हो, तो उनकी पोजीशन बहुत नाजुक और बहुत हसास जगह पर होती है। हम कैसे उनसे बात करते हैं, हम किस तरह से उनसे इंटरेक्ट करते हैं, प्रोफेशनली हमारा ताल्लुक उनसे कैसा होता है। तो जब मैं अपने रेजिडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ या उनके साथ बैठ के उनको कोई टीचिंग सेशन ले रहा होता हूँ, या इवन जब एग्जाम में होते हैं FCPS के लेने, तो एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि हमारी मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर जो चीज़ इस वक्त थोड़ा लैग कर रही है वो है एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी आमतौर पे ज़ाहिर है एक बड़ा कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तमाम जगह के ऊपर, ये क्या चीज़ होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर मैं एज ए डेंटिस्ट बैठा हुआ हूँ और सामने मेरी माँ अपनी किसी तकलीफ़ के लिए आती है और आप उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, या आपका बेटा या आपका भाई या आपका बहन, तो उनसे हम कैसे तवक्को रखते हैं कि डील करेंगे? ज़ाहिर है बहुत ही एक शफ़क़त वाला, एक मोहब्बत वाला और बहुत ही एक इज़्ज़त वाला उनके साथ रवैया इख्तियार करेंगे। लेकिन कोई एक XYZ मरीज़ हमारे पास आता है, तो क्या हमारा रवैया उन्हीं के साथ वैसा होगा? ज़ाहिर है 90% का जवाब शायद ये हो कि नहीं होगा। लेकिन मैं इस लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप उस रवैये का, उस ताल्लुक़ का 50%, 20%, 30% भी अपने क्लाइंट्स को कह लें या अपने मरीज़ों को कह लें या जो आपके पास साइल आ रहा है उसको करें, तो समझे मकसद हल हो गया। और इसी को हम एम्पैथी कहते हैं कि हाउ डू यू ट्रीट योर लव वन, नियर वन, और किसी एक आम आदमी को ट्रीट करना। तो एम्पैथी जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी है, बहुत लैग करती है, और अब तो खैर बहुत सारे सेशन के अंदर पढ़ाई जाती है। तो अगर हम पीमा के नज़्बुलैन को भी सामने रखें तो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी की तामीर और रज़ाए इलाही का हुसूल।
कि हम खिदमत करके जिस तरह से अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं इस बात को कि हम सब एक सर्टेन टाइम के लिए दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हम सब का एक वक्त है, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कुछ लोग तो बहुत पहले चले जाते हैं। आजकल आप फ़लस्तीन में देखें तो किस तरह से वहाँ पे जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है फ़लस्तीन में मुसलमानों के लिए, और किस तरह से मासूम बच्चे, आज का भी मालिक बता रहे थे कि 7,000 शहादतें वहाँ पर हो चुकी हैं, उसमें से 3,000 बच्चे हैं और जो ज़ख्मी हैं उनकी जो फ़्लाइट है, मेरा ख्याल है मैं और आप इस जगह बैठ के आज के इस एयर कंडीशन हॉल में बैठ के मेरा ख्याल है तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस अजियत से और किस मुश्किल से गुजर रहे होंगे। तो एज ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, पीमा ने लास्ट वीक एडवोकेसी के नाम पे पूरे मुल्क के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन के खास तौर पर जब हॉस्पिटल के अंदर एक हमला हुआ और हॉस्पिटल को तबाह किया गया जिसके अंदर 500 बच्चों की और मरीजों की शहादत हुई, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मोबिलाइज़ किया। तो एक एडवोकेसी होती है कि मोबिलाइज़ करना आम आदमियों को, आम डॉक्टर्स को, आम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, कि ये एक सेंसिटिव इशू है। इसके अंदर हमें किस तरह से एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर, एज ए आम आदमी, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान रिएक्ट करना चाहिए। ज़ाहिर हम यहाँ बैठ के दुआ तो करेंगे, लेकिन उनको मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करने का जो एसोसिएशंस पे काम कर रही हैं उनके साथ दस्ते बाजू बनना। तो ये वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन लेती है, यानी रिलीफ का प्रोजेक्ट। CME के साथ साथ जो पहले डॉक्टर मालिक ने आपको बताया कि कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन के साथ दूसरा जो हमारा मेजर इनिशिएटिव होता है वो रिलीफ का, चाहे वो 2004 का ज़लज़ला हो। अगर महज आप में से बहुत सारे लोग शायद उस वक्त मौजूद भी ना हो या उस वक्त ना हो, लेकिन 2004 का ज़लज़ला पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा, 70,000 लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर शहीद हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पीमा ने पूरे पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर उसमें जो इनिशिएट किया, हॉस्पिटल कायम किया, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया। इससे ज़लज़ला हो या कुदरती आफात हो, तो बीइंग प्रोफेशनल बॉडी हम ये समझते हैं कि डॉक्टर्स अपनी स्किल आम आदमी को दे सकता है एट नो चार्ज, एट नो कॉस्ट। तो पीमा का जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो रिलीफ प्रोविजन है, यानी रिलीफ प्रोवाइड करना अपने हमवतनों को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो लोग मुतासिर हैं, ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर, उनको प्रोवाइड करना, और नहीं तो कम से कम दुआ और हम अपनी जो हमारी इनकम है, जो अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दी हैं, उसमें से कुछ पैसे, कुछ खर्च उन लोगों की राह में देना, जिससे हम ज़ाहिर राह भी कह सकते हैं, अल्लाह की राह में भी कह सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है रिलीफ का प्रोजेक्ट, जिसका मैंने कहा। तीसरा ज़ाहिर है बीइंग डॉक्टर, बीइंग मुसलमान, बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम इस बात को बहुत अहम समझते हैं कि हमें अपनी तरबियत, एक तरबियत तो वो होती है ना जो कि हम पढ़ रहे हैं, आज बैठ के हम CME करेंगे तो हमारी तरबियत है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्रोफेशनल, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपने अंदर इन खसूसियात को पैदा करने की कोशिश करें, चाहे वो कुरान से ताल्लुक़ हो, चाहे वो अल्लाह से ताल्लुक़ हो, चाहे वो रोज़मर्रा के मामलात हों। ठीक है, इंसान जो हुक़ुक़ुल इबाद की बात हम रोज़ करते हैं कि दूसरे की ख्याल रखना, पड़ोसी का ख्याल रखना, हुक़ुक़ुल इबाद का ख्याल रखना, तो बीइंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम ये समझते हैं कि पीमा का जो तीसरा बहुत अहम कंपोनेंट है CME रिलीफ एडवोकेसी के बाद, वो है डॉक्टर्स की प्रोफेशनल, दीनी और अखलाकी तरबियत के लिए प्लेटफॉर्म फ्राहम करना। उसके लिए हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर कुरान हाउसेस डेवलप किए, क्योंकि हम समझते हैं कि कुरान हमारी जो है वो मशाल राह भी है और हमारी तरबियत का सबसे मौसर ज़रिया है। चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमने पिछले कई सालों में पीमा ने की कि डेंटिस्ट्री आमतौर पर आइसोलेट रही थी, तो मरकज़ी सतह पर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने डेंटिस्ट्री का एक शोबा कायम किया है, क्योंकि डेंटिस्ट्री इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की डेंटिस्ट्री के शोबे से वाबस्ता है, तो उनको पीमा के फोल्ड में लाना, पीमा का मेंबरशिप बनाना, ताकि वो हमारे दस्ते बाजू बने और हमारे साथ मिल के काम को बेहतर तरीके से आगे लेके चलें। तो मैं आप लोगों को दावत भी देता हूँ बिहाफ पे पीमा के, आप लोग जो पीमा के मेंबर बने और जो हम इस नेकी के काम में और इस कार खैर के काम में हमारा साथ बने और हमारे साथ मिल के चलें। आखिरी बात जिस पे मैं कह के अपनी इस मुख्तसर गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं और जब मरीज़ों से बात करते हैं, तो मैं हमेशा अपने साथ के जूनियर डॉक्टर्स को, अपने लिए भी उस बात को कोशिश करता हूँ करूँ कि जो दुआ है कि अल्लाह के रसूल ने बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दाइन, कि हम किसी भी मरीज़ को देखें, किसी भी मरीज़ से बात करें तो हम इस बात की ज़रूर कोशिश करें कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला कि जो इल्म हमें दे उस इल्म से हमें फ़ायदा हो। वैसे डॉक्टर्स, वैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हमें सब इस बात से आशना है कि अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म दिया है, जो हमें सलाहियत दी है, इससे मरीज़ को फ़ायदा तो होता ही होता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। नुकसान पहुँचाने की नीयत नहीं होती, लेकिन नुकसान हो जाता है। तो यकीनन वो किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अगर उसके हाथ से किसी मरीज़ को नुकसान पहुँच जाए, जो कि नीयत नहीं होती नुकसान पहुँचाने की, लेकिन उसके बावजूद हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दुआओं में इस बात का, आपको तो डेंटिस्ट ने एक दांत गलत निकल गया है आगे पीछे, वो तो खैर फिर भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है नाजायज़ या गलत, तो हमें अपने प्रोफेशन में अपने अंदर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे वो इल्म दे कि जो कि नाफ़े हो। और आज जो हम बैठे हैं और इसी नीयत से बैठे, अगर आप लोग इस बात की नीयत भी कर लेंगे, या अल्लाह मैं इसलिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ
अगले 2 से 3 घंटे, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो और मैं अपने मरीज़ों को बेहतरीन इलाज की सहूलत प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये भी आपका एक इबादत है। तो हमारा तो हर वक्त और हर लम्हा हमारा इबादत है। तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़ि व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दाइन। ज़ाहिर है जब आप, क्योंकि मेरा आपका तो रिस्क भी यही है ना, हमारा आपका तो रोज़गार भी यही है, हमें पैसे मिलते हैं, सर्विस चार्जेस मिलते हैं। तो इस दुआ के साथ जब आप मरीज़ की खिदमत करेंगे और उसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत देगा, रिस्क में भी कुशादगी अता करेगा, और आपके हाथ से भी और आप खुद भी जो है बीमारियों और मुख्तलिफ़ चीज़ों से महफूज रहेंगे। तो इस मुख्तसर बात के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सीधी राह पे रखे और हमें जो है वो खैर का काम, अच्छा काम और एक दूसरे के साथ मिल के अपने मुल्क के लिए, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और अपने माशरे की बेहतरी के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं आप सबको इस बात की दावत दूँगा कि आप लोग पीमा के मेंबर बने, ताकि हमारे साथ हमारा दस्ते बाजू बन के हम अपने खैर के मिशन को आगे जारी व सारी रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने इब्तिदाई गुफ्तगू रखी। अच्छा, हम बहसियत है मेडिकल प्रोफेशन और डेंटल प्रोफेशन के दरमियान ज़्यादा नहीं रहेंगे। बहुत जल्द जो है डेंटल जो होस्ट हैं वो टेकअप कर लेंगे। जिस तरह आमिर भाई ने अपनी गुफ्तगू की, बस मैं इसमें आपसे कहूँगा, आप तमाम लोगों को आते हुए हमने एक छोटा सा पीमा का तारुफ और उसके साथ एक छोटा सा किताबचा, अगर टाइम मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं मिले तो किसी को पढ़वा दीजिएगा। दूसरा ये है कि एक मेंबरशिप फॉर्म है, अगर आप समझते हो कि आप मेंबर बनना चाहें तो आप मेंबर बनिएगा, नहीं मेंबर बनना चाहें तो किसी को दे दीजिएगा। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस प्रोफेशनल बॉडी का जो दस्तो बाजू बने और आप अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट्स का हिस्सा बने, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट से ही माशरों में कोई तब्दीली आया करती है। इंडिविजुअल एफर्ट उस कलेक्टिव एफर्ट का हिस्सा बना करते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को इस दावत के साथ डॉक्टर तौसीफ से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम को अब प्रॉपरली मॉडरेट करें। हम आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर तमाम लोग वहाँ पे जमा हुए। असल मकसद डॉक्टर अब्दुल मालिक ने हमें टास्क दिया है कि डेंटिस्ट्री के अंदर हमें कोई प्रोग्राम अरेंज करना है। चूंकि पीमा जो है, जो मेडिकल साइड के ऊपर सीमी आवर्स तो बहुत अरसे से करा रहा है, और असल मकसद जो है लोगों को कलेक्ट करने का, कि लोग सीखें। क्योंकि इस बिजी स्केजुअल के अंदर हमारे पास वक्त कम होता है, तो हम स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाते हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, जो एक्सपर्ट है, उनसे हम जो है बुला करके उनके एक्सपीरियंस शेयर कराते हैं, जिससे हम फौरन से बहुत सारी चीजें लर्न कर सकते हैं। और यही तरीका है, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप एक्सपर्ट लोगों को कलेक्ट करें, उनके आइडियाज लें और उसके ऊपर काम करें। तो इंशाल्लाह हमने डेंटिस्ट्री का आगाज भी यहाँ से कर दिया है इनकी मदद से। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारा जो मेन मकसद है कि हम चीज़ों को लर्न करें इन द बेटर पर्सपेक्टिव। और जो सर ने बात कही कि एम्पैथी का, जो मैं खास तौर पे बस जिक्र करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इसके अंदर पैसे कमाने का जरिया तो दिया, लेकिन हम साथ ये नियत कर लें कि मैं पैसे कमाने के साथ लोगों की खिदमत करूंगा, तो अल्लाह ताला उस खिदमत का जो है हमें सिला भी जरूर देगा, और उस नियत का आगाज हो जाएगा, और इंशाल्लाह हमारे लिए भी आसानी होगी और आगे वालों के लिए भी आसानी होगी। और जो हम सोसाइटी को किसी भी एतबार से कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें करना चाहिए। तो ये भी एक हमारी जिम्मेदारी के तौर पे कि हम जो चीज़ें, जो एक्सपर्ट है, हमने उनको बुलाया है, वो अपनी बेटर नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज को हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह उससे हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे। जो हमें एडवांसमेंट की तरफ जाना है, हम वही बहुत ओल्ड एंशियंट टाइप की डेंटिस्ट्री से निकल के हमें फास्ट ट्रैक पे आगे बढ़ के आना है इंशाल्लाह। तो मैं कट शॉर्ट करते हुए बस मैं डॉक्टर आरिफ को पहले जो है एज ए प्रेजेंटर जो है कॉल करूंगा इंशाल्लाह, एंड उनसे कहता हूँ कि आप जी स्टार्ट करें स्पीच। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Can you hear me all? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोस। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता लंच वंच करके आए सब? नहीं किया लंच? आवाज नहीं आ रही, नो वॉइस। अस्सलाम वालेकुम, ये चाहिए। I'm Dr. Arif Tahir, working as a senior registrar in Liaquat College of Medical Dentistry. Today we are going to talk about few things about revascularization of immature permanent teeth. So before starting with the topic,
वी आर पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है डेंटिस्ट्री का, और हम अब दांत को सेव करने से ज्यादा रीजनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम डिजीज टिश्यू को भी रिप्लेस कर देंगे, हम अच्छी वैक्सीनेशंस भी बना लेंगे अगेंस्ट दोज वायरसेस जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। सो शिफ्टिंग इज इन प्रोसेस। और जो हमारा रीवेस्कुलराइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स। इनिशियली वी हैव टू रीग्रो द पल्प, नीचे पल्प से स्टार्ट करेंगे, डैमेज डेंटिन को रिप्लेस करेंगे और रिजॉर्ब रूट्स को रिप्लेस रीजनरेट करेंगे। ठीक है, 3 हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रीवेस्कुलराइजेशन के। नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द गोल्स? हम ये इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्ट दांत निकाल के दूसरा दांत क्यों नहीं निकाल रहे? नेचुरल टूथ प्रिजर्व होता है, और पेशेंट की एज से क्या दांत ठीक। बेसिकली वी वांट टू, यू मीन टू से कि वी वांट टू प्रिजर्व दैट टूथ इन दैट प्लेस, इज इट? कोई और? जो सेक्शन रियल कुछ बेहतर तो सेक्शन परसीव करा है वो हमारी मतलब बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू अगर हम पेटेंट प्लान अगर काम कर रहे हैं। मतलब जो सेंसेशन नेचुरल दांत की है वो इंटेक्ट रहे, ऐसा है? इसके अलावा किसी और के पास कोई आइडिया? मतलब व्हाट वुड बी द प्राइमरी गोल्स? क्या हम पेशेंट के सिम्टम्स रिमूव करना चाह रहे हैं, या क्या हम उसकी जो, क्योंकि इमेच्योर दांत है तो डेंटिनल वॉल की थिकनेस कम होगी, तो क्या हम उस थिकनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं? हम क्यों रीजनरेशन की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, एज अ क्लिनिशियन, चलें रिफ्रेज इट, एज अ क्लिनिशियन व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर पेशेंट? आप पेशेंट का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं एज अ क्लिनिशियन? एक वक्त में पेशेंट का ट्रीटमेंट आप क्यों कर रहे हैं? पेशेंट आपके पास क्या लेकर आया? तो एज अ क्लिनिशियन जब हम वहां पे कर रहे हैं तो रिवेस्कुलाइजेशन में भी हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हमने उसके सिम्टम्स को रिमूव करना है, ठीक है, और बोन को हीलिंग करनी है। उसके बाद के सारे प्रोसीजर्स नहीं चल नहीं रहा। हमने रूट वॉल की थिकनेस बढ़ानी है, वाइटैलिटी हम अचीव करना चाह रहे हैं दांत की, जैसे आपने कहा, या हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन जो कि अभी तक स्टिल हुई नहीं है। वी डोंट नो आइदर के अंदर जो ग्रो हो रहा है वो पल्प लाइक टिश्यू है या पल्प है। ठीक है, सो हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट यस वी कैन अचीव दिस थिंग। इनिशियली जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी एलिमिनेशन ऑफ सिम्टम्स है। सो रिवेस्कुलराइजेशन इज अ गेम ऑफ ओनली 3 थिंग्स: डेंटल स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड एन स्कैफोल्ड। आप में से गार्डनिंग का कितने लोगों को शौक है? गार्डनिंग कितने लोग करते हैं? कोई प्लांटेशन प्लांटिंग्स? कोई भी नहीं करता? एक, चलो एक करते, 2 और नहीं करते? चलें ठीक है, बेसिकली ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि प्लांट ग्रो कैसे होता है। इनिशियली यू नीड अ सीड, सो द स्टेम सेल्स आर द सीड। कोई सेल्स होंगे तो वो ग्रो करेंगे, ठीक। देन द ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स क्या है? जो आप सीड के ऊपर पानी डाल रहे हैं, जस्ट टू मेक इट इजी, जो आप उसके ऊपर पानी डालेंगे वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक। अब जो आपके पास पॉट में सॉइल है वो स्कैफोल्ड है। दिस स्कैफोल्ड विल पकड़ के रखेगा वो इन सब चीजों को। किसको? स्टेम सेल्स को पकड़ के रखेगा, ग्रोथ फैक्टर्स को पकड़ के रखेगा। सो आपको रिवेस्कुलराइजेशन अंडरस्टैंड करने के लिए प्लांटिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक। प्लांटिंग में भी क्या हो रहा है कि वो रीजनरेट हो रही है ना एक चीज, इसी तरह हमारे दांत के लिए भी रीजनरेशन ऐसे ही होगी। इनिशियली वी विल हैव डेंटल स्टेम सेल्स, देन बायोमटेरियल्स, देन ग्रोथ फैक्टर्स। Now we will see the different types of stem cells. There are so many. फॉलिकुलर स्टेम सेल्स होंगे, एपिकल स्टेम सेल्स होंगे, शेड के स्टेम सेल्स होंगे, डेंटिनल पल्प स्टेम सेल्स होंगे, बोन मैरो स्टेम सेल्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी स्टडीज ऑनगोइंग रिसर्चेस कर रही है टू प्रिजर्व द प्लासेंटा एंड गेट द स्टेम सेल्स फ्रॉम द प्लासेंटा, ठीक है। मतलब इट्स नॉट द एंड, इट्स द बिगनिंग। और इसके बाद चलें, स्टेम सेल्स की बात हो गई, ये हमने पिक्चर ली थी द जर्नल ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स से ऑन द सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स पर। नेक्स्ट, नाउ द ग्रोथ फैक्टर्स, like the water works in the regeneration of plant,
ग्रोथ फैक्टर्स भी ऐसे ही काम करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे स्टेम सेल्स को, और ये सिग्नल्स देगा प्रोलिफरेशन के लिए। अब ये प्रोलिफरेट हो गए, अब उनको डिफरेंशिएट होके क्या बनना है, तो दिस विल आल्सो गाइडेड बाय द ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स इसमें 3 चीजें बता रहे हैं, डिवाइड करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्टेम सेल्स को, प्रोलिफरेशन करवाएगा और डिवीजन करवाएगा, डिफरेंशिएशन करवाएगा। अब ये सारे काम करवाएगा कैसे? दिस इज द 3D इमेज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। फर्स्ट, अ ग्रोथ फैक्टर विल अटैच ऑन द रिसेप्टर ऑफ द टूथ सरफेस। उसके बाद वो यहाँ से न्यूक्लियस को मैसेजेस देगा कि जस्ट डिवाइडेड डिवाइड, इट विल डिवाइड एंड प्रोलिफरेट इनटू 2 एंड द साइकिल गोज ऑन। जब तक ग्रोथ फैक्टर्स रहेंगे वो इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं कि कितने सेल बनने हैं और कितने डिफरेंशिएट होने हैं। नेक्स्ट, नाउ द थर्ड थिंग, ग्रोथ फैक्टर्स के भी बहुत सारे गुड क्वेश्चन, बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत सारे इसमें रोल्स हैं और सब बहुत सारे नेम्स हैं और उनके बहुत सारे रोल्स हैं, हर ग्रोथ फैक्टर का अलग अलग है। अब एज यू सी द पॉट में वो जो सॉइल थी वो एक स्कैफोल्ड का काम कर रही थी, इसी तरह यहाँ पे जो स्कैफोल्ड होगा ये भी अटैचमेंट और माइग्रेशन करवाएगा सेल्स की। वो सेल्स जो आ रहे हैं डिफरेंशिएट हो रहे हैं और प्लोरिफरेट हो रहे हैं, उनको कोई जगह चाहिए रहने के लिए, तो वो इस स्कैफोल्ड में रहेंगे। ना सिर्फ ये अपने सेल्स को रखेगा बट इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा उस एक असेंबली को जो दांत के अंदर रिवेस्कुलाइजेशन के लिए बन रही है। So there are 2 main types, the biological or natural or the artificial synthetic. In biological, we have platelet-rich plasma, platelet-rich fibrin, chitosan and blood clot. Artificials में तो बहुत सारी चीजें हैं, बायोसेरेमिक्स है, बायोएक्टिव ग्लास है, कैल्शियम फॉस्फेट सीमेंट्स हैं, तो ये सारे स्कैफोल्ड्स की टाइप्स हैं। सो ये सारी बेसिक्स थी जो थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए। स्टेम सेल्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं और स्कैफोल्ड्स हैं। नाउ इफ वी गो टुवर्ड्स द क्लिनिकल सेटअप, ऑल्दो आपका क्लिनिक इस रीजनरेशन के प्रोसेस पे नहीं चलेगा, दिस इज अ वेरी फैंसी टर्म, बट योर क्लिनिक विल नॉट रन विद इट। आपके पास कोई बच्चा आया ओपन एपिक्स के साथ जिसकी डेंटिनल वॉल्स भी बहुत थिन थी एंड यू वांट टू रिस्टोर दिस टीथ, आपने इसका चैम्बर खोला और एंटीबायोटिक पेस्ट, ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट प्लेस करके इसको छोड़ दिया 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप ये आएगा पेशेंट आपके पास, आपने एक K नंबर की फाइल ली, आपने मिनिमम फाइलिंग करनी है इस पर, आपने ज्यादा फाइलिंग नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी डेंटिनल वॉल्स इतनी थिन है तो ये मजीद थिन होंगी और विच विल वीक द टूथ स्ट्रक्चर, ठीक। तो आपने मिनिमल फाइलिंग की और एपेक्स से बियॉन्ड 2 mm जाके एक स्टिमुलेट किया आपने ब्लीडिंग। इस ब्लीडिंग के साथ सारे ग्रोथ फैक्टर्स और स्टेम सेल्स ब्लड के थ्रू अंदर आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपने कॉटन को प्लेस करके एक प्राइमरी क्लॉट बना दिया, ठीक। वो मतलब आपने हेमरेज इसका कंट्रोल करके प्राइमरी क्लॉट बना दिया, उसके ऊपर एमटीए रखा और परमानेंट रेस्टोरेशन कर दी। वंस द हेमरेज गॉट कंट्रोल, उसके ऊपर आप एमटीए रखेंगे, वैसे नहीं रख सकते। देन आफ्टर follow up 3 months, 6 months, 8 months, you will going to see inshallah that there will be a regeneration of this root. This is a case report we are going to discuss. This is a clinical picture of a kid, 10-year-old, बाइसाइकिल से गिरा था, इंसाइजल ट्रॉमा हुआ। यू कैन अप्रिशिएट कि इसका जो स्टेप डिफॉर्मिटी आई है फ्रॉम इंसाइजल थर्ड टू, फ्रॉम सर्वाइकल थर्ड टू इंसाइजल थर्ड। इफ यू कैन सी द एक्सरे, ओपन एपेक्स है यहाँ पर और ये एक फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही है। नेक्स्ट, एनामेल और डेंटिन और पल्प इन्वॉल्व करती हुई। वी जस्ट रिमूव द फ्रैक्चर्ड सेगमेंट। After removing the fractured segment, we opened the canal and placed triple antibiotic paste to just sterilize the complete internal anatomy. अब यहाँ पे एक थोड़ी डिफरेंट सी चीज थी कि वो जो फ्रैक्चर्ड पार्ट था उसको वापस सीमेंट कर दिया कॉम्पोजिट से, जस्ट एस्थेटिकली वो इतना बुरा ना लगे। ये सीमेंटेशन के बाद जो हमने ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट डाला है उसके बाद का एक्सरे। नेक्स्ट, आफ्टर दैट हमने फाइल डाली थ्रू द एपेक्स और एमटीए प्लेस कर दिया ब्लीडिंग इंड्यूस करने के बाद। ये इसका 6 month फॉलोअप एक्सरे है। एमटीए प्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि डेंटिनल वॉल्स भी थोड़ी बन गई हैं और इसकी रूट लेंथ भी लंबी हो गई है। नेक्स्ट, दिस इज द 1 year फॉलोअप ऑफ द सेम टूथ।
एपेक्स क्लोज हो गया है। सो व्हाट आर द बेसिकली व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं रिवैस्कुलराइजेशन के? हम रिवैस क्यों कर रहे हैं? और भी चीजें हैं ना मौजूद। वाई यू आर ऑप्टिंग? क्लिनिकल सेटिंग में काम कर सकते हैं ये, आपको कहीं और नहीं जाना, ज्यादा पैसे नहीं लगाने, कोई फैंसी मशीनरी नहीं खरीदनी, ठीक है, सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई बायो इंजीनियरिंग नहीं करनी कि नहीं हमें तो फलाना लैब लेके जाना होगा, पीआरपी के लिए आपको जैसे सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन चाहिए होगी, इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट इंड्यूस द ब्लीडिंग, स्टेराइल एनवायरनमेंट में इंड्यूस द ब्लीडिंग एंड दैट्स इट। अच्छा, द क्लिनिकल सक्सेस रेट ऑफ एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट इट्स अबाउट 90%। लेकिन आपका जो लोग इस प्रोसीजर से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हमें रिवेस्ट ना करना पड़े और हम इसको एक्सट्रैक्ट करके इम्प्लांट से रिप्लेस कर दें। Although your clinic will not be going to run with either implants or revascularization procedures. Do you know any idea कि अगर क्लिनिक इससे नहीं चल रहा, ये फैंसी काम कर करके नहीं चल रहा, या ये जरूरी काम करके नहीं चल रहा, तो फिर किससे चलेगा? How will we earn? क्राउन ब्रिजेस और इतने माशाल्लाह सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए, कोई तो जवाब दो। द गुड विल सॉर्ट ऑफ। और आपका क्लिनिक चलेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, आपका क्लिनिक चलेगा आपके सॉफ्ट स्किल्स से। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी बात समझा सकें, यू हैव टू हैव एन एक्टिव लिसनर, आप उसकी बात सुन सकें, आप उसकी बात समझ सकें। जैसे मुझसे पहले एक स्पीकर ने कहा कि आप एम्पैथी शो करें, सिंपैथी शो करें, ये वाली चीजें आपका पेशेंट बार बार वापस जरूर आएगा। क्लिनिशियन बनना है ना, आपने क्लिनिक तो चलाना ही है, तो क्लिनिक चलाने के लिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी बात सुने और समझें, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज टू हेयर व्हाट इजंट इट बीइंग सेड, ठीक है, ये वाली चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम तो कर ही लेंगे, पेशेंट को नहीं पता चलता क्या काम सही हुआ क्या गलत हुआ, लेकिन उसको ये पता है कि आपका एटीट्यूड उससे कैसा था। सो दिस इज द की नोट्स एंड एनी क्वेश्चंस? जैसे इंटरनेशनल मेडिकल का लेक्चर रहता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्किल में सिग्नल लग जाता है तो टॉपिक रीजन हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर बात कर रीजन में तो ये भी हमारा नेचर होना चाहिए। तो बातचीत भी होगी इंटरनेशनल में हमारा बिजनेस क्या हुआ, क्योंकि हम भी 50% फार्मिंग करते हैं और यहाँ पे फार्मिंग करें उसमें भी अगर बीबी प्लांट हम डालते हैं तो यहाँ पे आके एमटीए की सर्विस तो डिफरेंस क्या हुआ कैसे? ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट आरसीटी में और रीजनरेशन में या रिवेस्कुलराइजेशन में क्या डिफरेंस हुआ। तो मैं चाहूंगी अगर ऑडियंस में से कोई जवाब दे, आरसीटी में और रिवेस्ट में क्या फर्क हुआ? बेसिकली वाइटैलिटी प्रिजर्व हो गई, ठीक है, आपका टूथ ग्रो, ठीक है, आपका एपेक्स फॉर्म हो रहा है, टूथ इतना वीक नहीं है। आरसीटी के बाद 90 दांत का कितना प्रोग्नोसिस होता है? आफ्टर आरसीटी 5 years का प्रोग्नोसिस है अकॉर्डिंग टू तोरा बेंजात, ठीक। और अगर आपने रिवेस्ट किया है तो 90% केसेस कामयाब होते हैं। तो बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें, वाइटैलिटी का मेन डिफरेंस है। ऑल्दो वी डोंट नो कि अंदर क्या चीज है, आइदर इट्स पल्प और पल्प लाइक टिश्यू, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस। और कोई सवाल? नहीं, मटेरियल में भी बहुत सारी इन्हांसमेंट्स आ चुकी हैं। यू कैन यूज एमटीए, यू कैन यूज बायोडेंटीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थीराकाल एलसी, मतलब बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिसपे कि आप कर रहे हैं, और मजीद बायो इंजीनियरिंग चल रही है टुवर्ड्स न्यूअर मटेरियल्स। These were the references. Thank you so much. Thank you, Dr. Arya, for the wonderful presentation. Welcome to Professor Shiraz. He came in after the busy schedule. वो invitation पे यहाँ पे मौजूद हैं. And thanks a lot, sir, for your kind. अब मैं Dr. Jamshed, he is working as assistant professor in JSMU. Now I call Dr. Jamshed to kindly address. Assalamu alaikum. This is Dr. Jamshid Ahmed. I've done my FCPS in operative dentistry. I'm currently working at JSME, Jinnah Medical University, and doing my PhD in dental health sciences. Today our topic is endodontic complications and its management.
what do you mean by endo complications? Can anyone define what endo complications can arise during the endodontic treatment? These are the unwanted circumstances that can occur during the endodontic treatment that may affect the prognosis of the tooth. How it can be avoided? These are the 3 T's which we have to follow. First one is the training. If you have good knowledge of the endodontics RCTs and how to perform it, and then technique, how we are performing it, and last one is the technology, what sort of the gadgets we are using. If we are having a good sort of the gadgets and latest gadgets, then we can avoid any complication that can arise during the root canal treatment. Okay, can you see the signboard? Complications that are going to be whatever you are master, how much you are master in endodontic treatment, but complication still will arise. Okay, how to manage them? These are some sort of the complications that usually arise during the endodontic treatment. Uh, During the excess cavity preparation, gouging and perforation can be done. And during the cleaning shaping, there are some also ledge zipping, transportation, perforation, or any instrument separation that can arise during the cleaning shaping. While during the obturation, under obturation or over obturation, that problems can occur. During the excess preparation, see this case, what problem has occurred over there? This was the tooth that was crown has been placed over there, but during the excess preparation, someone has perforated the mesial root. Okay, and see this one, during the excess preparation, due to inadequate knowledge of the tooth or inadequate failure to assess the longevity of the teeth, or failure to assess the long axis of the burr, failure to assess the long axis of the tooth, the burr has been placed slightly away from the vertical line of the tooth. Okay, that is called the gouging over there. So how can we avoid it? Again, we should have the good basic knowledge of the tooth morphology, then we can avoid it. While during the preparation, we have to make an straight line axis. We have to check out the line axis of the tooth and long axis of the burr as well. Okay. Then complication during the cleaning shaping. Ledge. What is ledge? Anyone can define ledge क्या हो सकता है? Instrumentation दौरान any artificial irregularity that is created, that is called the ledge. Okay. It usually occurs on the external wall of the curvature. And second one is the zipping. What is the difference between the zipping and the ledge? If your ledge is formed at the near to apical foramen, and there is formed one or more ledges over there, that is called the ledging. Okay, that is called the zipping. And ledge is formed at any surface, but usually it occurs below the curvature line. Then there is a transportation and the perforation. Their problems usually occurs. What is transportation? What is perforation? If you continuously digging out the ledge, that dig will create the transportation. But if it is communicating to the periodontal tissues, that will create a perforation. So perforation is basically communication between the pulpal tissue and the periradical tissue. While transportation may not communicate to the periapical tissues. Okay. I think we are clear till now. See one of the picture again as well. While during the excess cavity preparation, the cleaning shaping, the file that was not pre-curved has formed the transportation over here. When we pre-curve the file that is following the main canal, again here, this one, this was pre-curved, and finally it is bypassed. If we see the clinical radiograph, that was the case referred to us. And when we started our root canal treatment, during the file, we found a ledge over there. Then it's bypass. How to bypass? How to bypass the ledge? Can anyone define how to bypass the ledge? या लेज सबसे पहले ये बताएं कि लेज बनता क्यों है? लेज क्यों बनता है? फाइल को अगर आप प्री कव ना करें, मगर सबसे जो द मेन थिंग इज आई अंडरस्टैंड इट, आई गॉट द केसेस, अगर आपने एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन में स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं बनाई तो सबसे ज्यादा लेजेस तब बन रहे होते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या करना है? वी हैव टू मेक द स्ट्रेट लाइन एक्सेस. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव द साउंड नॉलेज ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द टूथ. स्ट्रेट लाइन बना ली, जहां पे फाइल आपकी कैनाल का कर्व जा रहा है, वहां से आपने फाइल को भी कर्व कर लेना है. अगर आपने फाइल को प्री कर्व कर लिया, देयर आर मेनी लेस चांसेस
that there are the chances of the ledge formation or endodontal complication while during the cleaning and shaping. Okay. So prognosis depend upon when and where the ledge occurred and can, और अगर आप उसको bypass कर सकते हैं या नहीं कर सकते. अगर bypass नहीं करें तो ledge से क्या prognosis पे फर्क पड़ सकता है? क्या ledge से prognosis पे फर्क पड़ सकता है? एपिकल, अगर लेज को आप बाईपास नहीं करते तो जो लेज की वजह से वहां पे एपिकल डेब्रिस बन जाती है, जहाँ पे वहां पे जो जो माइक्रोब्स वगैरह रह जाएंगे, that will lead to failure of the root canal treatment. So we have to correct it. अगर आप अब लेज को after correcting, after finding the main canal, you have to incorporate that ledge with the main canal. If we cannot incorporate that main canal with the main canal, at least you have a good irrigation of the canal. So there are no or very less chances of the debris accumulating over there. Okay. So prognosis will be increased. Second one is instrument separation. Instrument separation is a havoc. I think so. हमारे पास अपने ऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हर आए रोज सर हाउस ऑफिसर्स आके कहते हैं सर फाइल टूट गई. हमारे ट्रेनिंग एफसीपीएस की जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सर फाइल टूट गई, दांत निकलवा दें सर, दांत निकलवा दें, अब तो कुछ नहीं बचेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता. दिस इज नॉट दिस लाइक. अगर आप क्लिनिक पे भी काम कर रहे हैं, डोंट नोटिस, अगर फाइल टूट जाती है, यू हैव टू थिंक कि क्या करना चाहिए. वी कैन रिट्रीव द फाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल we can retrieve the file. If we cannot retrieve the file, then we can bypass the file. But उससे भी पहले the best treatment is the prevention. आपकी फाइल टूटती क्यों है जी? ओवर यूज ऑफ द सेम फाइल. देन उसके अलावा क्या करें? रॉन्ग टेक्निक. अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है, उसकी वजह से फाइल टूट सकती है. उसके अलावा साइक्लिक फटीग, वो इस इंस्ट्रूमेंट बार बार में इस्तेमाल कर रहे होते हैं. एक ही फाइल, जो फाइल्स हमारे पास आती हैं वो डिस्पोजेबल फाइल्स होती हैं. एक पेशेंट के बाद आइडियली वी शुड डिस्कार्ड इट. हम क्या कर रहे होते हैं, वही एक फाइल 10 पेशेंट में चला के साइक्लिक फटीग, उसके आप डेफिनेटली इट विल सेपरेट. मगर उससे भी ज्यादा बात जो हमने नोटिस की हुई है, अगर आपकी एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन आपने क्या बनाई है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन एक्सेस आपने अचीव की है या नहीं की, आपने कोरल फिलिंग की है या नहीं की, अगर आपका ये सही नहीं है तो अल्टीमेटली that will produce some more stress on the file. अगर आप नई फाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो आपकी excess cavity preparation will produce the stress on the file and it will definitely break away. ठीक है. तो सबसे पहले हमने straight line access अचीव करनी है with good corner fairing. ओके, फाइल सेपरेट हो गई, अब क्या करें? try to retrieve. सबसे पहले retrieve. Not possible, then at least we should bypass. There are some kits available. There are some methods by which we retrieve the file. First one is a mechanical. In mechanical, there are some pillars available in which we remove the file. There are some extracted wire loops, removal systems, ultrasonics, and lasers. And second method is a chemical. We dissolve the file. कभी देखा है फाइल को भी हमने डिसॉल्व किया है? If research has been done and there are many articles, but so basically it's an in vitro study. It's not a vivo study. In vitro study, they have dissoluted the file. How they have dissoluted? With the help of the sodium fluoride and calcium sodium fluoride and the sodium chloride. These two materials are incorporated in the tooth, and then it is via the current is generated. These are the polarized. When they are polarized, they work like an acid. When they work like acid, they dissolve the material. Even after 30 minutes, they have noticed the length of the file was reduced. I'm telling you the references of the international endodontic journals. There are many articles have been published till now, but still it's not a vitro study. It's not a vivo. Soon it should, I hope so, it will be incorporated in the vivo study. Then it's a surgical. If you cannot retrieve the file, if you cannot bypass the file, then we have third option. That's a surgical. Either we go for the root amputation, episectomy, intentional appendage, or hemisection. इस वीडियो को तो देख लें. Can you please turn on the video? इस सिस्टम में we are telling you how to retrieve the file via ultrasonic tips. This animation depicts the removal of a separated instrument with ultrasonics. In this example, the instrument segment is embedded in the middle third of the canal space.
The canal has been enlarged coronally to enhance the access of the ultrasonic tip. The ability to actually see the instrument fragment is required. The choice of ultrasonic instrument is dependent upon the canal size. If the instrument is higher in the canal, a larger Pro-Ultra endo tip can be utilized. Thinner, longer tips are utilized deeper in the canal. In this example, Pro-Ultra endo tip number 4 is worked around the visible portion of the instrument fragment in a counterclockwise manner. The ultrasonic energy removes tooth structure and vibrates the fragment loose. Switching to smaller tips, in this case Pro-Ultra endo tip number 6, is often advisable. Tip number 6 completes the loosening of the fragment. Yes. Did you understand the mechanism? How we do perform the file separation removal with the use of ultrasonic tips? There are some tips available in the market. There are basically two types of the tips. One is ED4D and one is ED4. ED4D basically is diamond coated. With that, the first tip that was used, what we do during the file removal with ultrasonic tips with the ED4D, we just make a gutter around that, around the file. So to expose the 2 to 3 mm corner surface of the file. Once we have done the stage platform forming, or we have made the gutter line around that, the part of the instrument is visible to us. When it's visible, then we use a second tip like ED4, and along with the energy of the ultrasonic tips, we can remove it out. Okay, I will show you some cases. जिसमें हमने cases remove किया. Patient came with a 23-year male with a complaint of the pain in tooth number 23. In tooth number 26. See this. The file was separated in the discobuccal canal, and that was 25 number file. That was basically referred by our house officer. Okay. And then after the cleaning shaping, with the help of the ultrasonic tips, we use ED4 tips over here to expose the surface of the 2 to 3 mm corner surface of the file. And then ED4 tips are used to remove the file. And this is the cone fit X-ray. This is the second case. A 38-year female was referred to us from JPMC. And again, the same problem occurred, but luckily, in this case, it was already prepared and the file S2 was separated over there. After the cleaning, because there was a space already, pulpectomy was done, so there was a space. So we did not go for any other procedure other than that. With ultrasonic tips, we just expose it and we just removed it. This is the file fragment, and this is the post-op cone fit X-ray. Third one, this is a 18-year male came to the dental OPD with a complaint of the pain in tooth number 46. While during the preparation for our resident, a file was separated at the apical area. File was separated. The radiographs are not that good. Okay, we are working in the government institutes. You can understand that sort of the things are not that much up to the mark. But can you see the file separate has been over there? Okay. Then again, it has been removed in the next case. Lenticular spiral was separated in the mesial root. In this case, we applied another technique that is called the braided technique. What we do in braided technique? In braided technique, we use different H files to engage the lenticular spiral, because lenticular spiral is already in a spiral shape that was easy to retrieve with the braided technique. In braided technique, we use the 20 number H file along with the 25 number H file. And we bypass the file from two sides and we engage this file with this lenticular spiral. And finally, we retrieve it. Another case, this is the case of the perforation. This was case also referred to us. The perforation has been done at the furcal area and this was repaired with the MTA. Again, this was the case referred for the re-endodontic treatment. But during the exploration, we found that there is one more canal that is, but this was not the canal, that was the perforation that was occurring on the distal side. Main canal was located, GP was removed, and it was prepared. The main canal, after having the obturation, fiber post was placed over there and the defect was repaired. So prognosis of the file retrieval depend upon at what stage the file was separated and what was the pre-operative status of the tooth. If there was a periapical infection or pulpal infection, so prognosis will be very poor. And if it is the file separated in the apical area, it's very difficult to retrieve.
And after that, at what stage the instrument was separated. If it is separated before the pulpectomy, then the prognosis is very poor if you could not retrieve it. And if it is separated after the pulpectomy, if still you could not retrieve it, the chances of survival and prognosis is better. And during obturation, what problems can occur? Under obturation and over obturation can occur. So take home message, prevention. इतनी सारी मेहनत करने के बाद इतनी सारे गैजेट इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? बेहतर है कि हम शुरू में ही प्रिवेंशन कर लें. जब प्रिवेंशन कर लेंगे तो फाइल टूटेगी नहीं. जब टूटेगी नहीं तो इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. That's all today. Thank you. Any question? If the caries has crossed the cemental junction, definitely there are poor prognosis for that. Prognosis affected, but we can if we go for the MTA repair, that we can go for the prognosis better one. The straight line exercise, if you find the canal, if you have to find the canal, then with the help of the SX file or with the help of the GGBR, you can achieve the straight line canal. Because the main जो आपकी मेन जो हमारी केनाल होती है जो वहाँ पे कर्व हो रही थी वो एपिकल से हो रही थी. ऊपर से तो आपने अगर जीजीबा चला दिया तो ऑलमोस्ट वहाँ पे एपिकल कर्वेचर पे ही फाइल हमारी जो केनाल होती है वो कर्व हो रही होती है. ऊपर इतनी ज्यादा कर्व नहीं हो रही होती. तो वी कैन अचीव इट. नहीं, if you are talking about the furcal area perforation, then we have to after exploring of the main canals, we have to repair it. Once you find the main canals, then we will go for the repairing of that area. Any other question? That's it. Thank you so much. Dr. Saqib Hamid here from the Altamash is assistant professor, and I would like to ask him to please take a dice. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I would like to begin my talk with a word of appreciation and gratitude for the organizers of this event for arranging such a wonderful session of dental events. And of course, not to forget, thanks to my fellow speakers for arranging such a wonderful platform to start up with the cases for surgical endodontics. Okay, moving on with my introduction. This is the place where I belong to, Altamash Institute of Dental Medicine. This is the nursery of my knowledge. I joined this place back in 2006, did my graduation from there, did my first job as a lecturer in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, did my training in FCPS and did my FCPS training in operative dentistry and endodontics, then became the faculty member, and now I'm currently working as an assistant professor in the Department of Operative Dentistry and Endodontics. So moving on with the topic of today, the periradicular surgery. These are the learning objectives of my topic. By the end of this session, the participants of this CME session on the endodontics will be able to discuss the indications of periradicular surgery. They should be able to classify the periapical bone defects, and they should recognize the steps of endodontic surgery. I'll divide my presentation into two components. First, we'll discuss a bit of theory regarding the endodontic surgery. Then I'll present you a case of endodontic surgery step by step, and then we can recognize the steps as well. So the introduction about endodontic surgery. Surgical root canal therapy, including the root end resection, has been practiced since at least the mid-1800s. Since then, it continued to evolve into a practice biologically based adjunct to the non-surgical root canal therapy. The key point is adjunct to the non-surgical therapy. So what we should understand is the first line of action for any endodontic pathosis is non-surgical treatment, right? So we should always take this endodontic surgical endodontic therapy as an adjunct for the cases which are refractory, which are not being getting healed after endodontic therapy, or there are some complications into it. Like Dr. Jamshed has showed us so many good cases which he had actually treated with file retrieval or anything like that. But in case if we are not being able to treat such cases, then we are left with the options of endodontic surgery. Okay. So there are some reasons that can cause persistent periradicular disease. What are those?
There are certain microorganisms that can survive in the dentinal tubules. There are canal irregularities, apical deltas, isthmus, which play a harbor, which gives a harbor to the microorganisms, and they can actually cause persistent infection. These are the cases where endodontic treatment may not provide us healing. Enterococcus faecalis, this is the main organism that is involved in the failure of endodontic treatment. Many of the students must be known about it. Do you guys have any idea what are the factors which lead to the resistance of antibiotics or the endodontic treatment for Enterococcus faecalis? What are the key features of Enterococcus faecalis which leads to non-healing of the cases? क्या Enterococcus faecalis की बातें होती हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा फेलियर केसेस में इन्वॉल्व होता है? Resistance to calcium hydroxide, the main thing. ठीक है? Then it can enter into dentinal tubules. Again, we cannot actually eradicate many bacteria from dentinal tubules. There are these bacteria, they form biocolonies, okay, and they can even enter into a dormant phase. When they enter into the dormant phase, what actually happens is any antibiotic we place in the canal, it doesn't act on it, so the bacteria remain resistant, and we may face the non-healing of endodontic cases. In such cases, we may have to go for surgical option then there are some overextended fillings which are going out of the apex, and we might have to do the apicectomy or endodontic surgical procedure. There are some periradicular cholesterol crystals or initial cases of VRFs which can lead to non-healing of endodontic cases, and we may have to go for endodontic surgery. So this takes us to the rationale of the surgical treatment. These are the indications, the lesions that are not been healed, and we can do the surgical treatment. And the rationales are long posts. Sometimes there are posts which are present in the canal, and we cannot retrieve the post, and we have to go for surgical option then. Then there are some irretrievable separated instruments, like Dr. Jamshed has shown us many of the cases. There are some non-negotiable ledges and canals. What do we do with them if the case is not healing? Of course, we have to go for surgical treatment then. There are some hard filling materials also which are not being able to retrieve from the canal. If we go for endodontic retreatment and the material is such that it is not being retrievable, how do we then approach it? We can approach it surgically then, okay? Then if there is a need of any biopsy from the apical area, we can go for surgical option. But having said that, non-surgical treatment still is recommended before surgical treatment to reduce the microorganism load from the canal. We first have to perform endodontic treatment. Only then we can move ahead with the surgical option. This is a radiograph showing a long post in a lateral incisor with a very adequate coronal restoration. We can simply go for endodontic surgical case because removing this crown, removing this post may lead to the fracture in the root. The viable option for this case would be a surgical approach going retrograde rather than orthograde. You guys get any idea of orthograde and retrograde? Orthograde is conventional entry into the canal from the coronal part, and retrograde is from the apex. Thank you. It might be, but if in such cases with such adequate restoration of the coronal part, we can just have a retrograde approach, and still we have good amount of bone left in this case. So it will be a success, hopefully. So what do we see in this case? As Dr. Jamshed again pointed out, transportation and perforation, right? In the mesiobuccal root. Do we have a pointer? Yeah. So can we see a transportation in the mesiobuccal root? There's the apex of the canal. Okay, so there is a transportation and there is a lesion here as well. So what do we do in such cases? How can we treat it? Again, a adequate coronal restoration is present. Apicectomy. See, apicectomy has been done. The root has been resected from the apical area, and we have placed an apical plug at the retrograde area, retrograde approach. And if you see the follow-up, see a good healing over there. The bone has regenerated.
So moving on with the lesions of apical area, there is a classification known as Kim and Crackman classification. We have divided the lesion into 6 parts, class A till class F. Okay. So class A is the absence of periradicular lesion with no mobility, normal pocket depth, unresolved symptoms after exhaustion of non-surgical therapy. In this case, simple retreatment is fine enough. Class B, the presence of a small periradicular lesion in the apical quarter. Clinical symptoms such as discomfort, sensitivity to percussion and sinus tract, normal periodontal probing depth, and no mobility. There is a small lesion, periapical lesion. Class C, large periapical lesion, progressing coronally but without periodontal pocket. We'll see the diagrammatic representations here. Class A, no periapical lesion. Class B, small periapical lesion. Class C, a large periapical lesion but with no coronal communication. We can see the coronal area is still intact. Okay. Then moving on to the large lesions. Class D, which is clinically similar to class C, but with a periodontal pocket of more than 4 millimeters. Then we have class E, which have a deep periradicular lesion with endodontic periodontal communication. I'll show it to you in the next slide. And then there is a class F lesion, which has complete denudation of the buccal plate. There is no buccal bone left on this in these cases. C. Class C, there is a small periodontal pocket. Okay. Then there is a communication between the pocket and the apical lesion. And then in the class F, there is no buccal bone left. In these cases, class D, class E, and class F, we might have to go for guided tissue regeneration as well. Okay. Once we are done with surgical endodontic treatment, we have to perform guided tissue regeneration, the bone grafting and the membrane placement. Okay, I'll show it to you in the case as well. So clinical decision making, what do we do? Again, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि क्लिनिक कैसे चलेगा, इतनी मेहनत क्यों करें, इम्प्लांट कर दें, है ना? केसेस होते हैं ना इस तरह के, आपके पास डिसीजन लेना होता है, either to go for retreatment, either to go for surgical treatment, or to go for implant. So the decision making should always involve the patient's will. You should have been able to perform or to pass on the information regarding the prognosis of each and every option and let the patient decide what he or she wants to have. Okay. The choice of the treatment should depend upon the evidence, clinical judgment, and patient's preference. Okay. Of course, patient health risk evaluation. Any surgical treatment, the medical evaluation comes first. In fact, not only a surgical treatment, any endodontic treatment needs a good medical health risk assessment for the patient. We should just skim through it. Procedure. This is the diagrammatic representation of what we do in endodontic, surgical endodontic treatment. If we see, we have gained an access by raising the flap. There is a large periapical lesion. Which classification this case falls into? Class C, yeah. Okay. There is no communication. There is a large periapical defect or large periapical bone lesion. So what we do, we actually raise the flap, gain access into the bone. This is the apical area which harbors most of the bacteria in apical deltas and isthmus. These apical deltas and isthmus, they harbors the bacteria and they lead to actually failure of the cases. So in such cases, we actually go for root end resection, the term apisectomy. We remove the apex, right? And why do we remove it? Because this area contains most of the bacteria in the isthmus and apical deltas. So we just remove it. And what do we do with the canal then? There is a canal over here. We have to make sure that the canal is sealed from the apex as well. Nothing enters into the canal from the apical side, right? So with such large bone defect, we might have to place some bone graft as well. Okay, that we'll discuss in the case. As with any of the surgical procedure, anatomy, you must know your anatomy well, because whenever you are dealing with any case surgically, anatomical factors do come into play, especially in our lower mandibular region, lower posterior region. What do we encounter with? The ID canal, the mental nerve, right? So we have to be very careful while placing our incisions in such cases.
What do we face in maxilla? Sinus. We have to be very careful regarding it. Okay. And on the palatal side, there is a greater palatine artery, nasopalatine nerves and vessels. So we have to be very careful regarding placing our incisions, raising the flaps, and dealing with the bone and soft tissues over there. This is a clinical case showing a relucency in the radiograph, right in the midline. If we see, there is a neurovascular bundle being identified right in the center, nasopalatine nerve and vessel. Okay. So moving on to the surgical access, the surgical procedure that we do. The surgical access, these are the general principles of the surgery. You should know your anatomy well. You should have good visualization of the lesion. You should minimize the surgical trauma. Of course, we have to minimize it, right? So we involve minimum number of teeth that we can work on. We have to place our incisions on the healthy bone. You must not place any incision on the diseased bone, right? Soft tissue management, we have to raise the flap. Obviously, there are vertical incisions, there are horizontal incisions. I'll show the case and you guys will get a better idea of it. This is a very good flap, ocean beam Luke flap. This is generally done to preserve the papilla. What do we have in anterior zone? Aesthetic zone. If there is any aesthetic zone and we are performing surgery and we give incisions on the papilla, what occurs after healing? There is some recession, black triangles may face. So this ocean being Luke flap actually helps us to avoid such situations. Okay. There are full thickness mucoperiosteal flaps. There are designs of it. If we give one releasing incision, we say it triangular flaps, two releasing incision with a horizontal incision, trapezoidal flaps. Then we have free-form rectilinear submarginal, which is ocean beam. So hard tissue access, raise the flap, we get access into the bone. And what do we do with the bone then? We have to remove the diseased bone, the granulation tissue over there. And of course, when you are getting the access into the bone, you might have to create a window over there by removing a part of the bone. And whenever you are removing the bone, mind you have to make sure that you do not overheat the bone. You must drill the bone along with saline irrigation. Otherwise, if there is any increase in the temperature of the bone, it may lead to further necrosis of the bone over there. Okay. So management of the root end. We have gained the access into the bone. We have removed the diseased tissue, diseased bone, granulation tissue over there. Then we resect the apical part of the root, right? And once we dissect it, we have to do something with the root as well. We have to place some medicines. What do we do? Resection. What about the resection? As we see, a straight line, a straight green line. Traditionally, we used to give an oblique resection, but nowadays we do a perpendicular resection. Okay, they say that if you are giving an oblique resection, it might expose more dentinal tubules, and the load of the occlusal load might not share well. So we give a straight line, perpendicular root end resection. Okay. Root end being dissected, then what do we do with the root? We do root end conditioning. We have to remove the smell layer from the root surface. And what do we use? Citric acid or tetracycline or EDTA. This is just to remove it because we have to seal this area, right? Once we are resecting and after resection, we have to seal it. And to seal it, we have to expose it well so that our material gets adapted well into this area. So we have different options of material that we use, and these root end material, I'll discuss it later. But first, how do we place our root end resection material into the canal? How do we place the material inside the canal to have a seal, the retrograde cavity that we have to place, right? Once we resect it, we create a cavity in the canal from the apical area, the retrograde filling material that we have to place over there. So what do? We actually prepare a cavity with a miniature handpiece in the apical side of the root, or we can use ultrasonic tips to create the cavity over there. Once
We prepare the cavity, we do the root and preparation. We do this apical plug sealing. See this? We have done a case, raised the flap, took out the bone, root and resection has been done, and a apical plug has been placed by preparing a retrograde cavity. And these are the different materials that we use. Traditionally, there was amalgam being used to fill the apical area, but nowadays we do not use it anymore. We use more biologically active materials like MTA or biodentine, but these are the list that we get into the literature, but frankly speaking, we just use MTA or biodentine more of in these cases. So once we are done with it, we have to close that site as well. So radiograph should be taken before the flap closure to detect any remnants. Then we properly irrigate and curate the bone grafting in class D, E, and F cases, and then flap is repositioned and suture it back. Okay. Can we have the next presentation, please? Okay. So this was the case. The patient was being reported to us for routine checkup, and we had a general physical examination and intraoral examination of that case. But when we saw the X-ray of this case, this was the lesion being present on her incisor and incisors, the right and the left central and lateral incisor. There was a big radiolucency, and there was a history of trauma to this case. So what we did a root canal treatment of this case, but since there was root resorption and such large radiolucency associated with it, so we opted for the surgical treatment then. This is the ocean bean loop flap. We can see the papillas are being preserved, and we have given the horizontal incision and two releasing incisions as well. The flap was being raised, and we can see the bone here. This is the bone fenestration. We get the idea that where is the defect, where we get the defect. This bony fenestration, this gave us the idea that where we have to start our bony window to create. We just get this fenestration over there, and we start removing the bone, a bit of it, with the help of slow speed roundbur with a copious saline irrigation. This is the window being created. We can see the bone defect over there. See this large defect. The granulation tissue was being removed from this site. Can you guys see the apex of the root here? Okay, the GP is coming out of it as well. So what's next? Root and resection. Okay, so root and resection has to be done. Can you guys see this? Light thoda si aur band hoti hai, so we could have seen it more better. This is the root and resection. And can you see the center in the center line GP here? Okay, so what do we have to do? Root and resection, and then we have to prepare the cavity, right? The retrograde cavity. The retrograde cavity now has been prepared. Can you see it here? I'll show it to you in the next slide. MTA, the material to seal the apical site. Okay. See, the apical site has been sealed with MTA. What do we do with the large bony defect? Bone grafting. Okay, see this large bony defect present, but it's a healthy bone now. We can see fresh blood coming out of it. This fresh blood is important. When you get the fresh blood, only then you are sure that okay, the granulation tissue has been removed. Regenos, bone grafting material. We are going to place this material inside the defect, mixing the bone grafting material and placing it in the defect. Okay. See, the bone graft has been placed very nicely. And then we are going to place the membrane. This is the membrane box. We have taken out the membrane, placing the membrane in the defect, over the defect. The membrane is placed. And what do we do next? Suture it back, right? So this is how we deal it. So once the healing is there will be no recession of the papilla, right? So this ocean bean loop flap really helps us a lot in aesthetic zones. This is the post-op X-ray. And if you want to compare it with the pre-op, see this lesion here and the lesion here. It's all gone. This root canal treatment nicely been done, and an MTA plug being placed at the apex with the bone grafting material. Okay. So
This is our superpower. We can save the teeth, right? And can we have the video please on? This is the nice little message I wanted to share with all of you. सच के जुमले ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। और वो जो मेरी, देखिए कोई एक बाजुकात इंसान बड़ी किताबें पढ़ता है और बाजुकात एक जुमला। अब ये जुमला आप देखें कि वो आबिद इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई नफा नहीं पहुंचा। अब ये इतना हो कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुझसे तो अल्लाह मेरे मर्तबे का पूछेगा कि पूरे पाकिस्तान में चंद लोग थे जिनको डॉक्टर बनाया, अल्लाह नहीं बनाया ना। और फिर उसके बाद क्यों बनाया? कि तुम नाफे इल्म हासिल कर रहे थे जिससे मखलूक का नफा हो। अब ये बताओ कि कितने लोगों का नफा हुआ। कब्र में नेमतें देने वाला नेमतों के मुतल्लिक पूछेगा कि दी तो तुझे मैंने नेमतें थी ताकि तू मेरे करीब हो जाए, सही बात, तो मेरी नेमतें इस्तेमाल करके जहन्नुम तक कैसे पहुंच गए। और गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। बल्कि एक और जुमला कि हम जिंदगी फिरौन की मांगते हैं और आकिबत मूसा की मांगते हैं। तो ये देख लेना कि अगर आपकी नमाज का अमल आपकी जिंदगी में जाहिर होना चाहिए। कोई शख्स तलाश करो जो तुम्हें दुआ दे, लेकिन एक शर्त है, उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ दे, वो तुम्हें देखे और दुआ दे। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि वो तुम्हें देखे और दुआ। क्यों गुनाह खतरनाक है रूह के लिए जी। तो हम रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। सही बात। आज का डॉक्टर इसलिए पूरा कामयाब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म को फोकस कर रहा है। रूह पहले बीमार होती है, जिस्म उसको फॉलो करता है। पुराना बिलीफ यही था, जितने भी मुस्लिम जो हकीम थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उनका ये बिलीफ था कि रूह पहले बीमार होती है, सही, जिस्म उसको फॉलो करता है। तो जब हम रोजा रखते हैं, खा तो कुछ भी नहीं रहे बिल्कुल, लेकिन रूह स्ट्रांग होनी शुरू होती है और फिर जिस्म उसको फॉलो करता है। क्या बात। अभी रिसर्च है 3 दिन का फाका, ठीक है ना, 3 दिन अगर आपने फास्टिंग की है लॉन्ग, और उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन होती है। अच्छा। और जितने पुराने खुलिये हैं उनको नए सिरे से बॉडी बनाती है दोबारा से। ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन फास्टिंग के जरिए। और टॉफेजी 2016 या 17 का नोबेल प्राइज विन कर चुका है बंदा। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही पुरानी के जितना खुराक जरूरी है उससे खुराक से दूर रहना जरूरी है। और ख्याल भी एक खुराक है, सिर्फ रिस्क खाना पीना तो नहीं है। सही। तो अब आप देखें कि आप अपने आप को किन ख्यालात से फीड कर रहे हैं। मनफी मनफी मनफी, वो थॉट्स बिकम थिंग्स। ये जब आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाए ना तो फिर वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार करती है। सो द टेक होम मैसेज, डू समथिंग फॉर समवन, कि आपको देखे और आपको दुआ दे। एंड वी आर ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ हीलिंग द डेंटल टिश्यूज। तो हमारे लिए तो वी हैव द स्टेज सेट कि पेशेंट हमें देखे भी नहीं और हमें दुआ दे, right? The patient, once the patient is eating or he is comfortable eating, he can give say a word of prayer for us, or if he is looking at his smile and he can say prayer for us. So with this and note, I would like to conclude my presentation. Thank you so much. Of course, yes, non-surgical treatment is the first line of action. Clinical examination is the thing, right? You have to perform the clinical examination, perform the periodontal probing, see the radiograph, and then you can see it. CBCT, thank you so much. CBCT is, it depends upon the patient. Sometimes the patient can have, like this patient, she didn't have any symptoms at all. It was asymptomatic. Necrosis हुआ होगा, necrosis तो लाजमी हुआ होगा, necrosis के बगैर तो ही नहीं। Thank you. Thank you, Dr. Saqib, for the sharing your knowledge. मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जहीर का जो JMDC से आए, डॉक्टर अजीम सुमरो, डॉक्टर सारा फ्रॉम JPMC, एंड नॉट बट लीस्ट प्रोफेसर शिराज हुसैन, प्रिंसिपल KMDC, जो खास अपने वक्त में से निकाल के हमारे लिए आए। सब लोगों को मालूम है वो स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक्स के जो है सुपरवाइजर भी हैं, प्लस बहुत अच्छे जो है वो कम्युनिकेशन स्किल के ट्रेनर भी हैं, एंड he is working CPSP as well, और बहुत सारी डेजिग्नेशन है जो हम अभी नहीं बता सकते, शायद लंबी लिस्ट हो उसकी। तो सर क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आपको मैं दावत दूंगा, तो काइंडली प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों को देख के अच्छा लगा। सारा है, आकिब, इनसे मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है। और मैं इनिशियली अगर मैं अपने मतलब बताऊं कि सबसे पहले मैं KMDC के फर्स्ट बैच का हूँ, और सबसे पहले मेरा सिलेक्शन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में हुआ था 2003 में, PIMS में फर्स्ट बैच लिया था उन्होंने। और उससे पहले मैं 5 इयर्स ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री पढ़ाता था, तो अल्टीमेटली खैर मैं ऑर्थोडोंटिक्स में चला गया। तो बड़ा रिफ्रेशिंग रहा कि आई एम श्योर कि आप लोगों को बड़ा अच्छा गेन हुआ होगा।
और हमारे दौर में चूंकि हम शुरू के बैचेस थे तो बहुत ही कम लोग होते थे, तो रऊफ मेमन साहब होते थे और वो जामशोरों से। तो हम जब 97 में हमने फाइनल ईयर में तो उन्होंने एक वर्कशॉप की थी। सो उसमें गट बैन की उन्होंने जो है थ्योरीज और उसके कॉन्सेप्ट पे बात की थी। सो इट वाज माइंड ब्लोइंग कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो गए थे। डेंटिस्ट्री की जो इवॉल्वमेंट हुई है, मैं आपको बताऊं, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमें ब्लॉक में ना प्रिपेयर कराया जाता था, कैविटी प्रिपरेशन, वो प्लास्टर के ब्लॉक होते थे। तो कॉन्सेप्ट ये था कि पहले राउंड बर लेंगे, फिर स्ट्रेट बर से वॉल बनाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोन बर से जो है ना उसकी। तो हम ये करते थे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हमारे पास एक टीचर थे जो डॉक्टर आरिफ अली के साथ काम करते थे, हमारे नूरुद्दीन प्रधान। करंटली वो पीएचडी और फैकल्टी हैं यूएस में। तो थर्ड ईयर में जब हम लोग आए तो वो उन्होंने आए और उन्होंने कहा यार एक बार होता है पेयर शेप 330 जहाँ तक मुझे याद है अभी, यार वो सारे काम करते हैं सडनली। मतलब दुनिया तो पहले हम एक बार लगाते थे, उस वक्त जो छोटी सी फैंटमेट में भी प्रिपरेशन करते थे तो एक बार लगाते थे, दूसरा उन्होंने कहा नहीं यार इसको यूं करोगे तो वॉल बना देगा, यूं करोगे तो राउंड भी कर देगा, सब कुछ कर देगा। दुनिया तब्दील हो गई। ठीक है। सो इंटरेस्ट बना तो डेंटिस्ट्री का जो फर्स्ट लव होता है वो मेरे ख्याल से मैक्सिलोफेशियल सर्जरी होता है। और फाइन ईयर का जो लव होता है ना वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री होता है कि लोग जब तक फाइन ईयर में आते हैं तो कहते हैं यार ऑपरेटिव डेंटिस्ट बनना है, रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट बनना है। तो उनके साथ हुआ, रऊफ साहब के साथ। फिर हम जब अगेन फाइन ईयर में आए तो रऊफ साहब ने मैं वर्कशॉप कराई माउंट माइंड रूट कैनाल के ऊपर। तो वहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट तब्दील हुए। तो फिर क्या होता है आप इवॉल्व होते हैं। तो इनिशियली मैं फैकल्टी बना, मुश्किल फैकल्टी था, तो बहुत सारे जो पुराने जानते हैं। तो थोड़ा ये होता है कि ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम इवॉल्व कैसे होते हैं। तो जब मैं नया नया बना तो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती थी, पुरानी पुरानी किताब होती, तो मैं वो लेकर आया था कंटेम्पररी ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की बुक। उतनी मोटी थी बुक, पढ़ा उसको, वो प्रोफ्लेक्टिव ओडोंटोमी, ये वो सब कुछ, नंबरिंग सिस्टम, बार, ये सब। टीचर बन गए। टीचर बन गए तो लोगों से क्वेश्चन मुश्किल पूछना शुरू कर दिए। तो अपनी होता है ना जरा सा थोड़ा सा होता है, कमजोर होता है ना बंदा, जो जरा झलक जाता है। तो वो हमारे टीचर होते थे ऑपरेटिव के, जो हमारे हेड थे दौरान में। तो मैं कराते हम लोग थे सब चीजें। तो वाइवा होता था ना, मैं कहा सर उसने ये नहीं बताया, सर इसने ये नहीं बताया। सर कहते हैं वो सर जाने दो यार, ये सीख लेगा, जिंदगी में सीख लेगा। तो सीखना लाइफ तो वक्त के साथ इवॉल्व हुए। तो अब सो इनिशियल 5 इयर्स में जो इनके प्रिंसिपल हैं, हजरत नैम वो मेरा क्लास फेलो है, और अरशद ऑपरेट वो मेरे ख्याल से डाउ रेंटल में है। हम सब डॉक्टर इम्तियाज हैं, वो डीन है अभी डाउ में, हम सब क्लास फेलो हैं। तो इनिशियल 5 इयर्स के हमारे बैच में सिर्फ एक डिस्टिंक्शन थी। 5 ईयर में एक डिस्टिंक्शन थी, एक नंबर से। और आज से सेकंड 2 साल पहले ऑर्थोडोंटिक के रिजल्ट में आउट ऑफ 100 60 डिस्टिंक्शन थी। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरे डिपार्टमेंट में, तो मैंने उनसे कहा कि यार भाई इस वक्त मतलब 40 वो लोग जिनकी डिस्टिंक्शन नहीं है वो डिस्टिंक्टनेस होगा था, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब डिस्टिंक्ट है ना, तो डिस्टिंक्शन नहीं रही। तो वक्त के साथ फिर हाई एंड होते होते फिर आप सिंपल होना शुरू आते हैं, वो गोसियन कर्व की तरह का मामला है। तो क्या हुआ कि अब हम, मैं जैसे रूट कैनाल है ना, मुझे पुरानी बातें याद आ गई। तो मैं लोगों से, पेशेंट से कहता भाई गिलास है, उसको अंदर से साफ करना है, रोज करते हैं हम लोग ना, ना उससे बाहर जाना है, उसके पेंदे से बाहर नहीं जाना है, और उससे ऊपर छोड़ना नहीं है। ठीक है। यानी जब मैं अपने डॉक्टरों से बात करता हूँ, मैं बस ये गिलास है उसको साफ करना है, इतनी सी बात है। और दूसरा ये कि एक जुमला पढ़ा था, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। आंख बना लो कि ना, एक फाइल को हर दफा देखना चाहिए। हम उठाते हैं और देखते हैं, डाउट में हो बेहतर है फेंक दो, बजाय इसके के बाद में इसके वाली प्रैक्टिस कर रहे हो जो फाइल टूट जाती है, ये सब हो जाता है। तो बहरहाल बहुत ही अच्छा लगा, मेरे लिए बड़ा रिफ्रेशिंग था। और इतने सारे पार्टिसिपेंट को देखकर, और पुरानी इनकी तस्वीरें में बस पड़ी है अभी भी। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे बुलाया। और मैं छोटे से जो लेसन वक्त के साथ सीखा, और हम जो ग्रो करेंगे ना, आपको कंपिटिटिव होना चाहिए, कंपिटिटर भी होना चाहिए, लेकिन हेल्पिंग होना चाहिए। ठीक है। तो अपने कोलीग के साथ आपका कंपटीशन है, लेकिन इस तरह का नहीं है कि जिसमें आप उसको गिरा दें। तो इथिकल होना बहुत बड़ी बात है। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मनी है ना वो आपको ल्योर करती है। तो मसला ये है कि आपको नो कहना भी सीखना चाहिए, कि कभी कहे नहीं, पेशेंट तैयार है चीज कराने को, नो कहना सीखना, वो सबसे देर में सीखा। जो अब हम पेशेंट आते हैं, अभी मैं रिसेंटली ऑर्थो एक पेशेंट है, वो इधर उधर से होकर उसकी ब्रेस्ट ट्रीटमेंट में थी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली जो चीजें मांग रही थी वो हो नहीं सकता था, अनरियलिस्टिक।
तो जहाँ पे आपको इथिकल डिसीजन लेना चाहिए, तो जो आपके क्वेश्चन है और ट्रीटमेंट डिसीजन मेकिंग में जब मैं देख रहा हूँ, मैं क्लिनिकल डिसीजन लेते हैं, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि इथिकल डिसीजन भी लेंगे। और अब वक्त आ रहा है कि आप सिर्फ सिंगल स्पेशलिटी प्रैक्टिस या जनरल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस का स्कोप इतना नहीं होगा जितना कि स्पेशलिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिस का होगा, मल्टी सेंटर जो हम बैठते हैं। सो एक दफा हमारे ग्रुप है जिसमें हम सब मौजूद हैं, तो वहाँ पे केस पुट हुआ, ऐसी किसी ने रख दिया कि एक एक दांत मिसिंग है, लोअर इंसाइजर। तो अब लोग, अब तो क्या अप्रोच क्या होती है, तो जो ऑपरेटिव वाले थे उन्होंने कहा जी मैं जो है स्पेस था वो एक इक्वल टू द सिंगल इंसाइजर के था, तो उन्होंने कहा कि मैं दांत लगा दूंगा इम्प्लांट। अच्छा, इम्प्लांट अगर आज से 20 साल पीछे चले जाए ना तो कोई नहीं बोलता इम्प्लांट ट्रीटमेंट ऑप्शन में। तो ये 2006, 8, 10 के बाद ऐसा हॉट हुआ और अब लोग जाते हैं, पहली चॉइस ज्यादातर लोग इम्प्लांट दे देते हैं। अगेन बहुत से मामले इथिकल नहीं होते, तो एक ने कहा इम्प्लांट, एक ने कहा मैं कंपोजिट फिलिंग करके दोनों तरफ से जरा सा ब्रॉड हो जाए, लेकिन लोअर जो है लिप उसको कवर करता है, स्माइल में अपर टीथ नजर आते हैं, लाइक मैं कर दूंगा। मैंने कहा मैं ऑर्थोडोंटिक करके स्पेस क्लोज कर दूंगा। सो बड़ी बहस हुई, मैंने कहा देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि नेचुरल है, आपको कोई मेंटेन नहीं करना था चीज़, आपसे ओरल हाइजीन नॉर्मल मेंटेन करनी, सही हो जाएगा। तो जब केस आप इवॉल्व होते हैं तो आपके ऑप्शंस, तो मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होता है कि ना अच्छे ऑप्शंस होते हैं। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन मेरी राय ये कि ऐसे लोगों के साथ साकिब है, सारा है, ये हैं, इनके साथ बैठे हैं, एक टिप मिलेगी जो उन्होंने कोई 10 किताबें, मतलब किम्स क्लासिफिकेशन है, ये डमर्स क्लासिफिकेशन है, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपने इतनी किताबें पढ़ी होंगी तो निकाली होंगी, आपको एक सेकंड में पता चल गई। तो इल्म का जो जो फैज़ है ना, वो मतलब वो बयान से बाहर है। तो मैं कहता हूँ कि आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अगेन वेरी मच थैंकफुल टू दी टीम पार्टिसिपेंट, दिस गुड स्पीकर्स, एवरीवन, के आपने मुझे बुलाया और मुझे भी मेमोरी रिफ्रेश हुई और मेरी नॉलेज भी बढ़ी। अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थोड़ा सा वक्त आपको और लेंगे, अवार्ड अप्रिसिएशन के लिए मैं आपको कॉल करूंगा। फर्स्ट प्रेजेंटर हमारे डॉक्टर आरिफ ताहिर, काइंडली प्रेजेंट द अवार्ड। सर आप प्रेजेंट करेंगे? जी जी, डॉक्टर आरिफ प्लीज। डॉक्टर जमशेद फ्रॉम JCMU। Now in the last, Dr. Saqib Hamid, thanks a lot for coming. मैं डॉक्टर सनोबर को दावत दूंगा, पीमा की यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, तो काइंडली सर आप प्रेजेंट करें डॉक्टर शिराज को। नहीं सर, आपके लिए प्रेजेंट है। सर थैंक यू, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और ऐसे ही कोई सेशन में इंशाल्लाह आपको दावत देंगे जिसमें आपने जो है, ये तो बस जस्ट एपेटाइजर है। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। आप इतने दूर से इस इवेंट के लिए आए और पीमा को तलाश करते करते पहुंच गए सारे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सारे आज। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस जर्नी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम और स्टार्ट करेंगे, और दिस इज अ एपेटाइजर। इंशाल्लाह हम और जो है अच्छी चीजें जो है डॉक्टर साकिब से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे टॉपिक के साथ, न्यू के साथ और इनोवेटिव डेंटिस्ट्री के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़े और सब लोग इससे फैज़ दे सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।